Under the topic of statistical analysis, Indian statistics, we will take the role of statistical services in planning and monitoring development program in India. Here today we will see what are the outlines. First, background of Indian statistical system, इसका advantages क्या हैं, role क्या है statistical offices का, and how the generation and use of data for planning and monitoring development programs. Let us start with the historical development or the background of the statistics. तो जो statistics का अगर बात की जाए तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र से ही स्टार्ट हो गया था. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ सेंसस और डेटा कलेक्शन होता था. उस टाइम पर भी एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो विलेजेस और टाउन्स को कवर करते हैं, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक मेन पिलर माना जाता है. कोएसिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट्स. उसके बाद ह्यूनस्टैंग ने राइटिंग्स जो डेट लेट 7th to early 8th century में पाई गई. It was a detailed description of plan of cities, construction of houses and an account of common products in India and data on area of kingdoms and distance between them. After the Tasang's writing, आईने अकबरी by अब्दुल अफजल, जो एक मुगल पीरियड को शो करता था. It was a system of legalized measurement, land, classification and crop yields, seasonal variations etc. तो यहाँ पर भी जो सिस्टम हुआ था लैंड टेन्योर या लैंड रेवेन्यू का, वो भी स्टैट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पावरफुल पिलर्स में मेन काउंट किया जाता है. ब्रिटिश पीरियड में अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो वी गियर टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत बार पाया गया. डेवलप्ड इन द प्रोविंस, एक्सपैंडिंग इन स्कोप टू कवर द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सिविल सप्लाईज. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, लेबर, कोऑपरेशन, हेल्थ एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. Afterwards, a small department of statistics was founded in 1847. Dynamic changes comes in existence in 1848. The first census relating to the area and revenue of each in the northwest provinces was released. 1848 के बाद डायनेमिक आपको इसके चेंजेस दिखाई दिए जो स्टैटिस्टिकल इरा का मेन बेंचमार्क माना जा सकता है. In 1853, the first series of statistical papers in India was released. 53 के बाद 1862 में पब्लिकेशन स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में हुआ. दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन रिटर्न्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनुअल फीचर्स. टिल 1923 डॉक्टर W. हंटर ने अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 1869 में, जो CSI का रोल भी प्ले कर रहे थे. ब्रिटिश इरा का ही अगर हम कॉन्टेक्स्ट लें तो ईयर 1881 में कुछ रिकमेंडेशन इंडियन फेमिनिन कमीशन को दी गई. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओपन हुआ फॉर कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और एक पब्लिकेशन भी 1886 में किया गया जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड था. एंड फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वर collected this time. After 1881, in the year 1995, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, जिन्होंने ट्रेड एंड कमर्शियल स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया. ईयर 1925, इट वाज द ईरा जब इकोनॉमिक इंक्वायरी कमिटी सेट हुई थी, विच रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस for the coordination, institution of a statistical cadre, establishment of state, provincial statistical departments. So you can see in all the years different changes were seen in the history of statistics. Now the question comes, what are the advantages of this subject? First, the adequate, credible and timely data generated are essential for the purpose of policy formulation and for monitoring the progress of various sectors of the economy. Definitely इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स से प्रॉपर पिक्चर अगर आपको लेनी है तो स्टैटिस्टिक्स एक की रोल प्ले करता है.
The requirements for decision making have expanded from time to time. On the other hand, the establishment, the empirical evidence is only given by the statistical methods. To understand the behavior of various social, economic variables such as enrollment, patents, widows, household consumption, expenditures, etc. With the help of statistics, impressive और commendable economic development को draw किया जा सकता है. The constant growing requirements of the timely and reliable data remains a challenging task. The composition of national economy is focusing on services which have the implications for collection and dissemination of the data. Well, the C.I. Rao 1989 writes that it is now regards the chance inherent in all natural phenomena, and the only way of understanding nature and making prediction is with the help of statistics. So we can say statistics of India includes the planning of data, collection in terms of the design and census and experiments. Statistics provide करता है tool for predictions and forecasting using data and models, and widely applicable in the areas of natural and social sciences, government and business. If we see the present Indian statistical system, how it frameworks, so first of all, the functions within federal structure of the Government of India. Secondly, the authority and responsibility for collecting the statistics is determined by the overall responsibility for the subject under the Constitution. Literally or vertically decentralized. फिर aggregation of state level data, national level data, state level and district sub-district level data collect किया जाता है. Central government acts as a coordinating agency for presentation of statistics. CSO, MOSPI, नोडल एजेंसी एक प्लान डेवलपमेंट स्टैटिस्टिकल सिस्टम ब्रिंग अप करता है कोऑर्डिनेशन इन स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. इन इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जितने भी ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हैं वो साथ सबऑर्डिनेट करते हैं. स्टैटिस्टिकल स्टाफ परफॉर्म करता है सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को. नेक्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल सिस्टम एट द स्टेट्स. तो स्टेट लेवल में देखा जाए तो जनरली डिसेंट्रलाइज लिटरली ओवर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद मेजर डिपार्टमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर और हेल्थ हैविंग लार्ज statistical divisions for the work of departmental statistics. Next, at the apex level, Directorate formerly Bureau इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में काम करता है जिसे DES भी कहा जाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इन द स्टेट एज वेल एज फॉर लाइजिंग विद द सेंटर. पब्लिशिंग का काम, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट का काम, हैंडबुक्स ऑफ द स्टेट्स, एनुअल्स, इकोनॉमिक रिव्यूज़ और सर्वेज, district statistical abstracts, state budgets analysis, work out the estimates of the state, domestic product and retail price index number, engaged in other statistical activities as is relevant to the state. Next, you can say that some states have a common statistical cadre. So, these are some points which are related with the state level. How the data flows, what is the hierarchy that is responsible for the smooth working of the statistical department. So it is starting from the district officers of departments, then it flows to the statistical unit of state government, and then it takes the statistical unit of central ministries. इनका वर्क होता है primary as well as subsequent flow of administrative statistics. Next, subsequent flow of administrative statistics weak coordination, and primary flow of administrative statistics strong coordination, and subsequently flow of administrative statistics weak coordination. So here as the graph is showing, it is actually flowing CSO, then SU of GOI ministers, then SU of state governments, and finally the states DES. Generalization of data for planning. There are certain sources of data जो कि planning
और कंट्रोलिंग के लिए यूज़फुल होती है नेशनल और स्टेट लेवल में। बेसिकली ये जनरेट करता है द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो कंसर्न करता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बैंकिंग एंड फॉरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। पीरियोडिक सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट NSSOs के सर्वे एंड पॉपुलेशन सेंसस पे डिपेंड करती है। डेटा जनरेटेड बाय यूजिंग एस्टिमेशन टेक्निक्स, process of computation of important indicators involves the combination of data mainly from the above sources. Now the question comes, what are the uses of data for planning and monitoring? Basically, the decentralization and local level planning, training in use of data for planning and monitoring development, और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डेंस ये प्लानिंग की जाती है। Outcomes of the data analysis and interpretations are used for proper planning, implementation and evaluation of various programs at district level and monitoring and evaluation of flagship development program. Some of the data uses are monitoring of MDGs and HDI, poverty estimation and fixing poverty line, consumer price index where we have to measure the inflation rates, national accounts, GDP complication, contribution of unorganized sector, data used